So let's start. सबसे पहले turn on the gas and put water to boil for our pasta. After the water gets boiled, add a little bit of black pepper, salt and 1 tablespoon of oil. And after that put our pasta in it. याद रखना स्ट्रेट वाला पेन्ने पास्ता यूज करना है. Let's start the main process of making pasta. सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे. उसके बाद तेल गर्म होने के बाद हम उसमें करी लीव्स डालेंगे, कड़ी पत्ता. Then finally chopped garlic and onion. Cook the onion nicely until it gets pinkish. Once our onion are cooked, हम उसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरे. And stir it until the tomato gets red. And then we'll add salt as taste. Once our tomatoes are cooked, we'll add 1 tablespoon of tomato ketchup in that. Then let's move on to our spices. सबसे पहले 1 tablespoon of tikkat masala, that is red chili powder, and half tablespoon of turmeric, that is halad, and mix it, stir it well. Then we'll add little bit of lemon juice. उसके बाद विल यूज़ 3 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम. अगर आपको फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं करनी और आपके पास नहीं है तो मिल्क एंड बटर इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेश क्रीम. यू कैन यूज़ मिल्क एंड बटर. And then last but not the least, we'll add our pasta. No, not the last, not the least either, but we'll add our pasta.
Then last but not the least, we'll add half a packet of pasta masala. And lastly, sprinkle some oregano and we are done.